Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Advocate Mehak Ahuja, and today we will be discussing about part 1, that is union and its territory. So we have already discussed in our previous video what is constitution, what is meaning of constitution, what is preamble, what is the origin of preamble, history of preamble. Now we are coming and stepping into the union and its territory, that is part 1. And further on we will be discussing about other topics like citizenship and other parts. So this is the part 1 of the constitution. So I'll be waiting for next 2 minutes to everybody to join in this live session, and people who would be watching later on can make this video into 1x. Everybody to very good evening, Rohan. So we are beginning with the part 1, that is union and its territory. And everybody else can join in and we will be beginning up with it soon. So earlier we have already discussed what is constitution, what is meaning of constitution, how many articles are there, how many parts and schedules are there, how many amendments have been made. If anybody of you remembers and able to recall how many part and schedules are there, can comment down below. So there are 448 articles in 25 parts, and there are 12 schedules with more than 100 amendments made in the constitution. To be precise, there is 105 amendments as of now in Indian constitution, and recently the new bill has been passed that would also be amounting to the amendment. It is still to be decided, number and the position is to be marked. So the bill that is passed is of the criminal law. There have been three acts. The IPC, CRPC, and evidence have been made its changes, and that video is currently going to be uploaded on my channel soon. So at present, there are 448 articles in 25 parts and 12 schedules. So last video I made sure and I told you that the articles, parts and schedules are different to each other. Schedules are the extra documents which are not attached into the parts and articles. So parts is the units, among that, the chapters are called articles, and extra information is kept into schedules. So today we are stepping into part 1, that states union and its territory. So in part 1 there are four articles that are chapters also, but in law we call them articles. So there is a precise difference between articles and sections. So articles are basically referred into the constitution, and sections are referred into procedural code or the punishment codes. That is IPC, CRPC, evidence, contracts, torts, everywhere else. Any law which is made has the sections. Only the Indian constitution has article, because it is the basic source of keeping in mind whenever the new law is made. We cannot make any new law or make changes in anything in our country except referring to the articles and the constitution. So today we will be discussing about in detail how new territory is made, what is union, what is territory, what is state, how new state is formed, and even if somebody wants to replace the name, somebody wants to make the changes in the state, and even if the India acquires state, how what is the procedure and how it is done. So everything in detail is being explained in article 1 to 4, and I'll begin with it.
So, Article 1 talks about the name and the territory of union. So, Article 1 says that the India, that is Bharat, shall be a union of states. Now, a point to be noted here is, why do we call union of states? So this is a very general question which comes in every exams like competitive and even our colleges exam. Why it is called union of states? What made India being the referred name called as Bharat? So which name to be used when we refer it to India? Whether we call it Bharat or we call it India? So recently there was a PM Modi, Narendra Modi had made a statement stating Bharat is doing this into his any of the speech, and that Bharat word got too much highlighted, that whether he has made changes to the world, whether he has made any announcement, or whether he has done anything without informing anybody. So it was nothing like that, because in our constitution it is prescribed that India, that is Bharat. Bharat we call in Hindi, where before independence India was known as Bharat. There was no such term India, but India to get is global recognition, global value, everybody can get it. That is why we call that states, that India, that is Bharat, shall be union of states. By the union of states, I mean the we have a diverse culture. We have so many states that are evolving. We have so many things going out around these states. Every state has their own government, and that government is recognized by one member who is the member of the India or the Bharat, the PM or the Prime Minister. So there is a hierarchy of status. One, president; second, PM; third, all the MPs and other electoral body that is being elected by us in a democratic country. So we discuss what is democratic country. A democratic country is that country where we elect our members, where we are choose our members from our choice, our will. So we are choosing the into the union of states whoever we want to be elected, and union of state is that state that every state is united to each other. Nobody has right to be separated. For example, if Maharashtra start earning a good amount of money and the state is doing well off, but they want to be separated from India, it is not possible, because we haven't come into an agreement with each other. There is no such agreement made between India and the other states that you will be part of state. These all states are acquired by India, and all these states are the union to each other. We are here to support. Here Punjab support Rajasthan, Rajasthan support India. So everything is collaborated and everything go hand in hand. But they also exercise their excessive powers. They have a right to do anything. They have a certain apart from their limitations and rights as well. And some of the states are headed by the central, that is directly from the PM side, but some of the states held are done by different sides. For example, there are union territories. Union territories are headed by the central government, and rest all other states that are headed by the government of the state official itself. So coming to India, that is called as Bharat. So there is no India separate, there is no Bharat separate, everything is equal. Union of states, which they have not made an in particular agreement towards it, but they are part of each other. That is why Union of States. This is what the official Article 1 states. Article 1, Clause 2. So, whenever we see anything in the bracket and the number, that is clause. Article 1, Clause 2 states that the states and the territories will be specified in the first schedule. Now, what is first schedule? What does first schedule means? We have discussed that there are 12 schedules, but what does the first schedule means? So first schedule here is the territory. India, it is written that these are the states and these are the territories. Is being described in the schedule, and this is how schedules look like. So schedule look like this.
the number of states, all the number of, this is just the demo picture which I am showing of the schedule, how the schedule look like. And it mentioned the number of states, how many states we have. Currently we have 29 plus states, including the union territories. So Jammu and Kashmir, the territory which is immediately before the commencement of this constitution, was comprised in the Indian state of Jammu and the Kashmir. Nagaland, Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Meghalaya, every state is described how much part is there, whether they've been acquired earlier, they have been acquired after the amendment, what is the provision, how many territories are there. So everything is described in this schedule. First part, you can check it out on your constitution book also. I have referred already J.N. Pandey. It's a good book. You can refer it. Coming back, how does the Article 1 state? So, I hope Article 1 and Clause 2 is now understood. Now, coming to Clause 3. Clause 3 states that the territory of India will comprise of the following things. One, the territories of the state, the union territories mentioned in the first schedule, and such other territories that may be acquired. So, what does India, the territory means? Here, the territory means the boundary. What is the boundary of state? Boundary of the country. So it involves the territories that are made through the states, or the union territories which have been part of the Schedule 1, or the territories that are acquired later on by the government. So general term, if we come and see what does the generally it means. So Article 1 is described in Union of States. Dr. B.R. Ambedkar said that the India Federation has a union because it is indissoluble, and no state has a right to separate from Indian Union. The country is one integral unit. Beside the fact it consists of the different states of the convenience and administration. The phrase Union of India and territory has been differentiated. The Union of India includes states enjoying the status of the being of the federal system and sharing the powers with Union. The territory of India includes not only the state but the Union territories, such as the territories may be acquired by India in future. Well, this is the explanation of what this Article 1 says. So, as I explained the Article 1, B.R. Ambedkar said that it is a federation of union that is dissolvable, and no state has right to separate from India. So, as such, there is no agreement made between these states that they can be have their own special jurisdiction and start exercising their own rights. It is part of state and they will come into the state administration. The phrase Union of India and territory, there is a slight difference between union and territory. So, Union of India includes the states being the members, being the federal, exercising its power with the union, and whereas territory of India not only includes the states but also the union territories that are formed in the India. So usage of states, because term usage of states has been done because there is no agreement made between among the parties to be part of India. No state has right to be separated from India because and become the another new country. The Union of India includes not only states of India. The territory of India include UTs, and UTs mean Union of Territories, and other territories will be acquired by the India. So I hope this is clear. Now coming to Article 2. Now, once we know what is country, what is state, what is union of territories, what is union of India, the territories of the states, when we are aware of this term, then we come into the establishment of the states. So it deals with the admission and establishment of new states. Parliament may have law admit into union or to establish a new state based on the terms and the conditions. So it basically means a law. It deals with the admission. The parliament itself, it is to be emphasis on the parliament that parliament has right
to make admission or establish a new state. It has complete right whether to be part of that, which state to be part of our country, which state is to be removed, what are the terms and conditions to be used, what are the terms and conditions to be prescribed. Everything is explained by the parliament, and parliament is that integral part of our constitution which govern the country. So every new law which come into action, or any new subject which is to be introduced, any general topic also to be discussed, come into the part of the parliament. Parliament takes into the action and call it. Parliament may be law, into the union, or establish a new state based upon the certain terms and conditions applied to that. So Article 1 states what is India and Bharat, what all states to be established, and what comes into Union of India and the state. And Article 2 talks about the Parliament has power to admission and establish a new state. Are these two articles understood? Please comment down below and let me know whether you are able to analyze the difference between Article 1 and Article 2, because these are the very basic articles which will help you later on and which will come in exams. And usually, these four articles should be on your tips. What is state? Because in which country you are living, it is important to be known. Who administer the work, who does the work, and where to reach out to parliament. So Article 1 talks about the state Bharat and the India, what all to be included, what all not to be included, and Article 2 talks and deals with the administer and establishment of new states. Now coming to Article 3. Once the India and the state is being acquired and everything we have learned about the process, now come how to form a states and alter the areas or the boundaries or the name which are existing into states. So everything is acquired now. It's the term of creation of formation and alteration of the areas. So Article 3 talks about Article 3 talks about formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states. Okay, I'll explain Article 2 again. So, Article 2 basically talks about, before moving forward, Article 2 talks about the establishment of new states or deals with admission of new state. Uh, if we want to administer or we want to deal with certain new state, who will be handling over everything? That is Parliament. Parliament will admit into the union or establish a new state based upon the certain terms and conditions. So, art, Article 2 provides the admission and establishment of new states. That is only done on the basis of the terms and conditions made by the Parliament. Is it understood now? So, Article 1 talks about the state, and Article 2 talks about what is the admission and establishment of the state and how to establish it. The parliament can only do and establish a new state and a new territory based upon the conditions. Okay. And once we have established and the new state is being formed, now comes how the formality is to be done, what action to be taken, what name to be kept, what are the general information about the state, whether name to be changed or whether the territory it is to be marked. That come in Article 3. So, Article 3 talks about the formation of new states and alteration of the existing areas and the boundaries or name of the existing states. The states which are already existing, where we can make the alteration into areas and boundaries, or we can change the name. So, you must have seen there have been so many changes in the names. For example, Gurgaon, state.
area in Delhi which was called now as Gurgaon. Early, Gurugram. Earlier it was called as Gurgaon. Now it is called as Gurugram. So what is this change made? This is being changed only by the bill passed that is in the parliament. So parliament passes such rules and orders, and certainly there have been so many states like this where the state's name has been changed. So can you remember any of such state whose name has been changed, or you are able to recognize any state, like even if I am able to recall a lot, but any states which name was earlier something else and now is different, there have been certain amendments also to that. Can you recall any of those? So anybody can recall any of the name? Let me tell you mine. What I know, there have been certain changes. So recently, Odisha, that was Odisha, now known as Odisha, and Pondicherry is being converted into Pondicherry. Then there was another states also. Yes, guys, I'm waiting. Let me know if you are able to recall anything. उत्तरांचल का नेम चेंज हुआ था। यस, हुआ था। क्या नाम रखा फिर उसका? उत्तरांचल का नाम चेंज होके उत्तराखंड हुआ था, राइट? सो ऐसे अगर किसी, वही अब आते हैं बात पे कि अगर किसी को चेंजेस करने होते हैं, कुछ भी करने होते हैं, तो वो एक एक्ट पास होता है, एक बिल पास होता है, जिसमें वो सारे अपने नाम लिखते हैं कि ये नाम चेंज हो रहे हैं, दिस इज द न्यू ऑल्ट्रेशन। और ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ ए form a new state by separation from the territory from any state, or by uniting two or more states or part of states by, or by uniting any territory to a part of any state। तो इसमें ये क्या कह रहा है पार्लियामेंट, वो या तो नई टेरिटरी बना सकता है अपनी स्टेट की, या दो स्टेट्स को कोलाइड कर सकता है, साथ में जोड़ सकता है, या कोई दो पार्ट्स को जोड़ सकता है, कोई दो पार्ट्स में से अलग अलग पार्ट्स भी बना सकता है उसके, या वो यूनाइट कर सकता है किसी टेरिटरी को एक स्टेट से। टेरिटरी और स्टेट में हमने डिफरेंस देखा था अभी। तो वो कैसे यूनाइट कर सकता है? पार्लियामेंट के पास यही लॉ है, ठीक है। फिर बाय इंक्रीज ऑफ द एरिया of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, or alter the name of any state। ये सारे चेंजेस पार्लियामेंट कर सकता है, सेपरेशन कर सकता है यूनियन टेरिटरी से। आप सोचिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल है जिसको हम कह रहे हैं कंट्री। अब इसके आसपास बहुत सारे और सर्कल्स हैं, दीज आर स्टेट्स। अब अगर आपको एक दूसरी कंट्री बनानी है या दूसरे चीज करनी है, तो आप उसमें से हटा दोगे उसको, या तो बाहर सर्कल को, राइट, या फिर आप उसको साथ में कोलाइड कर दोगे कि ये साथ में मिलके एक बड़ा सर्कल हो जाए। पर हमारी कंट्री में क्या बोला जाता है, हमारी पार्लियामेंट में ये बोला जाता है कि जितने सारे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, ये सब हम साथ के हैं,
we are together, we are not different, we are not make any contract or agreement with each other that we are different, we all are together. जितने भी एक एरिया में सर्कल्स पड़े दैट कैन बी रिकॉल्ड इन टू स्टेट्स, और ये सारी चीजें एक है। अब हमें दो स्टेट्स को मिलाना है तो हम वो दो बॉल्स को मिला देंगे। अगर हमें वो स्टेट को अलग करना है तो हम वो बॉल्स को अलग करके उनके अलग अलग नाम रख देंगे। पर एक बॉल का नाम जैसे रेड कलर है, हमें उसमें ब्लू कलर रखना है, तो वो भी हम बिल पास करेंगे। या कुछ अगर हमें एरिया इंक्रीज करना है उसका, तो हम वो भी बिल पास करेंगे। या हमने वो एरिया निकालना ही, वैनिश ऑफ ही करना है, हमें वो चाहिए ही नहीं, तो हम वो भी बिल पास करेंगे। तो हमें कुछ भी चेंजेस करना है कंट्री से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, वो हम सब पार्लियामेंट में ही करेंगे जब पार्लियामेंट बैठता है, सेशन में बैठता है। तो इसका जनरल इसका है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस टू बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or the name of the state. The bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its view thereon. Such period may be specified in the reference or within such period as a president may allow the period so specified or allowed as expired. सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इन जनरल ये बोलना चाह रहा है कि जो भी बिल है या कुछ भी अगर नई चीज पास करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही पास होएगी। जब वो बिल एविडेंट जो बिल है वो प्रेसिडेंट पास करेंगे, लेजिस्लेचर बनेगा उसका, तभी उसको कंसिडर भी किया जाएगा, तभी उसके ऊपर कोई फैसला भी होगा, तभी कुछ चेंजेस भी होंगे। एक्सप्लेनेशन 3, इसका कहता है, इन दिस आर्टिकल द क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी बट द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी। एक्सप्लेनेशन 2, the power conferred in the parliament by clause A includes the power to form a new state or new union by uniting the part of the state and union territory to any state or the union territory. This is nothing to be focused on and not to be revised, but इसमें difference बस बता रहा है state और union territory के अंदर। तो कमिंग टू द जनरल मीनिंग, दिस वॉज व्हाट द आर्टिकल स्टेट्स, एंड आर्टिकल क्या है। पर उसका जनरल मीनिंग ये कहता है कि जैसे मैंने बताया, पार्लियामेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो न्यू स्टेट बनाए, नई टेरिटरी बनाए, या कुछ भी कंप्लीटली यूनाइट करे, डिफरेंट करे, फॉर्मेशन करे न्यू स्टेट का, या ऑल्ट्रेशन करे, या फिर वो बाउंड्रीज में कुछ चेंजेस करे। उन पार्लियामेंट कैन इंक्रीज एंड डिमिनिश एनी एरिया ऑफ द स्टेट एंड कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो हमें आर्टिकल 3 दे रहा है पार्लियामेंट को। तो it states that the parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states completely or indifferent by uniting any territory to be part of the state. It deals with formation of new states, alteration of area of states, boundaries and name of existing states. Thus, the parliament can increase or diminish the area of the state or alter the boundaries or name by any state. अब ये सब करने के लिए उनको क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है। सबसे पहले उन्हें बिल पास करना पड़ता है जो प्रेसिडेंट में होता है, आइदर हाउस में, जैसे मैंने बताया था, पार्लियामेंट में। फिर वो बिल जो है वही आगे प्रेसिडेंट रेफर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, इंट्रोड्यूसिंग पार्लियामेंट की आप लोगों का क्या ओपिनियन है। एंड आफ्टर दैट वो स्टेट लेजिस्लेचर अगर फेल हो जाए अपनी बाउंड्रीज में या अपनी लिमिटेशन में या एक्सप्रेस व्यू करने में, तो वो वाला बिल जो है वो सबमिट होता है दोबारा से विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें आर्टिकल 3 के जो स्टेप्स हैं वो है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल only after the recommendation of the president in either of the house of the parliament. ऑप्शन फिर 3 कहता 2 कहता है, if such bill efforts the
boundary or the name of the state. Then the president will refer the bill to the concerned state legislature before introducing it to the parliament for their opinion. थ्री कहता है कि सेकंड थर्ड स्टेप है, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर फेल्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन within the given time limit, then it is deemed and is expressed its view. Parliament is not bound to accept and act on upon the views of the state legislature, even if the state has submitted their views within the period of time. तो ये सारी चीजें जो हैं कि बिल कैसे पास होता है, कैसे हम एक नई स्टेट बनाते हैं, कैसे नया रिवीजन होता है या रिकमेंडेशन क्या प्रेसिडेंट से आती है, ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल 3 में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 1 हमें बताते हैं कि स्टेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन कर रही है स्टेट को, और कंट्री का नाम इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 कहते हैं इंडिया दैट इज भारत। सेकंड आर्टिकल हमें बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी कुछ करनी है, हमें स्टेट की ऑल्ट्रेशन करनी है, तो वो हम सेकंड से करेंगे, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 हमें बताता है कि अगर हमें कहीं पे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ऑल्ट्रेशन करनी है, एग्जिस्टिंग में चेंजेस करने हैं, तो उसके स्टेप्स क्या है, हम उसे कैसे कर सकते हैं। इतनी डिटेल्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी वी आर द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो आई होप सो आर्टिकल 3 आपको क्लियर हो गया हो। कमेंट डाउन करके बताओ कि अगर कोई डाउट है तो। Okay, got a thumbs up, which means it's done. You have understood it. Coming to the last article of this particular part, that is 4. Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, accidental and consequential matters कि जो हमें आर्टिकल 2 और 3 में बताया था, टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट इन वन एंड फोर्थ शेड्यूल और सप्लीमेंटल या एक्सीडेंटल या कॉन्सिक्वेंटल, दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट आर्टिकल टू बी रेड अपॉन और याद करने में भी, क्योंकि इसमें आर्टिकल 4 में आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि आर्टिकल 2 क्या था। तो उसको कैसे ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 1 क्या था कि हमने एक इंडिया या स्टेट है, उसके अंदर अब हमें उसे कैसे इस्टेब्लिश करना है या क्या चेंजेस करने हैं, और थर्ड को कि उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, और फोर्थ कि उसमें अगर कुछ आर्टिकल्स में 1 और 2 और 3 में कुछ अमेंडमेंट करनी है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को लेके, तो वो कैसे होएगी एक्सीडेंटल या कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स में। तो याद करने का तरीका इनका बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ो कभी भी, तो आप उससे रिलेटेड देखो कि क्या लिखे उसमें। अगर उसमें लिखा है आर्टिकल 2, तो सबसे पहले सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ कि आर्टिकल 2 अभी हमने पढ़ा है वो क्या था। आर्टिकल 2 क्या था, फॉर्मेशन की नई कंट्री इस्टेब्लिश, नई स्टेट इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 की वो क्या स्टेप्स हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट के। तो अब कुछ अमेंडमेंट करनी है या कुछ भी करना है, तो वो शेड्यूल 1 और 4 में आएगा। Any law referred in Article 2 or 3 shall contain the provision of amendment of Schedule 1 and Schedule 4 as may be necessary to give effect to the provision of the law, and may also contain such supplemental and accidental and consequential provision, including the provisions as representation in parliament and in the legislature or the legislature of the states or the states affected by such law as parliament may deem necessary। तो जो मैंने समझाया कि अगर कुछ उन्हें चेंजेस करने हैं, कुछ सप्लीमेंट्री चेंजेस हैं, एक्सीडेंटल चेंजेस हैं, कुछ प्रोविजंस में वेरिएशन करना है, या कुछ भी अगर करना है, पार्लियामेंट में ही चीज जाएगी। हमारा कंट्री पार्लियामेंट ही रूल करेगा। No such law as aforesaid
shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of Article 368. So, do you remember what is 368? 368 मैंने बताया था 368 सबको याद है. व्हाट इज 368 गाइस? कमेंट डाउन बिलो, बताओ मुझे. मेरे को याद नहीं रहता. आई आई हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. मुझे बार बार याद रखना पड़ता है कि क्या है 368. सो 368 इज अबाउट द अमेंडमेंट्स. अगर कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी चेंजेस करनी है, तो वो आर्टिकल 368 में जाता है. तो इसमें हम जनरल समझते हैं कि हमने क्या क्या समझा है अभी तक. आर्टिकल 3 एंड इसमें आर्टिकल 1 जो था दैट टॉक्स अबाउट दिस इंडिया, दैट इज भारत. फिर उसके बाद आर्टिकल 2 हमें बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स अगर होएगी तो. आर्टिकल 3 बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या ऑल्ट्रेशन बाउंड्रीज या कुछ भी करना है. और आर्टिकल 4 हमें बताता है कि कुछ भी अगर हमें आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी एक्सीडेंटल है या कुछ प्रोविजनल है या कोई भी चेंजेस हैं, तो वो आर्टिकल 4 में होंगे. और 368 उसमें अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है. सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. पार्ट 1 हमारा ये 4 आर्टिकल्स आज के लिए कंप्लीट होते हैं. आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4. 4 talks about amendment. 3 talks about states alteration and areas boundaries name or the existing states. 2 talks about admission and establishment and 1 what India, that is Bharat. तो ऐसे हमें याद रखना है ये पूरा. और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, कि इंडियन के सिटीजनशिप हैं तो वो कोई और ड्यूल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं, या क्या उनके क्लॉजेस हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेंगी. और ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. तो किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे से पूछ सकता है अभी. क्योंकि पार्ट 1 अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आज. तो इसमें क्वेश्चन है, नया लॉ अगर किसी को बनाना है या कोई नया एक्ट बनाना है तो उसका क्या प्रोविजन है. उसका प्रोविजन ये होता है कि हम पहले बिल पास करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट में ही हम बिल कोई नया बना सकते हैं या कोई नया लॉ बना सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ में. तो जैसे आजकल क्राइम का चल रहा है कि क्राइम अब हम नए चेंजेस लाना चाह रहे हैं कंट्री में. जो पुराने ऑफेंडर्स थे या जो पहले पुराने वाले ऑफेंसेस थे उसकी पनिशमेंट जो है बहुत कम लिखी है, अमाउंट जो है वो बहुत कम लिखा हुआ है, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम का था. उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं हुए अभी तक. तो वो सारी अगर चीज़ें हो रही है, आप अगर अभी आप नोटिस करो तो वो सारी चीज़ें हो रही है पार्लियामेंट से. पार्लियामेंट में अभी एक बिल पास हुआ है जो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से हुआ है. अभी रिसेंटली वो पब्लिश किया है बिल.
और जिसमें सारे चेंजेस बताए हैं कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नए लॉज है, पूरी की एक एक्ट उन्होंने निकाली है। और आजकल नई एक्ट भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें नाम चेंज कर दिया आईपीसी का, सीआरपीसी का, सीपीसी का। तो ये मैं अभी डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम में कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए लॉज आए हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए, अभी हम एग्जिस्टिंग वाले फॉलो करें या नए करें। तो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें हमारे जो कोर लॉज है वो सेम ही है, बस अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुए हैं जो कि हुए हैं पार्लियामेंट के थ्रू। पाल अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, कोई नया लॉ बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, वो सब हम करते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन बैठता है? सारे मेंबर्स वो बैठते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो हम लोगों ने इलेक्ट किए हुए हैं, जो हमने चूज करे हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो सारे बैठते हैं उसमें। सो आई होप सो क्लियर हो गया हो ये। तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया? पार्ट वन। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसको कंटिन्यूअसली ना ऐसे रिवाइज करते रहो कि पहली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के हमने सैलिएंट फीचर्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हम आगे आए, आगे हमने आगे पार्ट्स डिस्कस किए, स्केड्यूल्स डिफरेंट डिस्कस किए, और क्या आर्टिकल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने बिगिन किया पार्ट वन से। पार्ट वन में हमने चार आर्टिकल्स डिस्कस किए, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि स्टेट, दैट इज इंडिया और भारत, डिफाइन करता है। सेकंड बताता है इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन का, इस्टेब्लिशमेंट का ऑफ न्यू स्टेट्स। थर्ड कहता है कि फॉर्मेशन या ऑल्ट्रेशन करना है हमें एरिया में, बाउंड्रीज में, या एग्जिस्टिंग नाम में चेंजेस करना है, तो वो हम जाएंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 जो है वो हमें बताते हैं कि अगर हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है एग्जिस्टिंग आर्टिकल 2 और 3 में, तो वो हम फोर्थ शेड्यूल में जाके करेंगे। और शेड्यूल 1 हमें बताते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्टेट्स हैं, नए लॉज हैं, या स्टेट्स को अच्छे से डिफाइन की गई है वहाँ पे कि कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारी। और आर्टिकल 4 जो है वो अमेंडमेंट्स की बात करता है, जिसमें वो लिंक करता है 368 आर्टिकल जो अमेंडमेंट्स का है, और अमेंडमेंट जो हमें स्केड्यूल में मेंशन की गई है, स्केड्यूल नंबर 4। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना एक सर्कल सा डिस्कस किया था, आर्टिकल 1 से 4। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम शुरू करेंगे सिटीजनशिप पे, आर्टिकल 5 से। So I hope you found this video very helpful. Then please like, share and subscribe, and share it with your friends so that they can also join the live session and ask for the sessions. I usually take classes by 7 p.m. to 8 p.m. और अगर किसी दिन कुछ changes होता है तो मैं वो update भी कर देती हूँ YouTube और Instagram पे। YouTube handle is the Lawyepedia, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, एंड आई विल बी एंडिंग दिस लाइव सेशन फॉर टुडे। सो आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन बिफोर एंडिंग द सेशन। तो ये है, मैम कोई भी लॉ सिर्फ पार्लियामेंट में ही बिल पास होने पे बन सकता है क्या, या उसके अलावा भी कुछ? नहीं, जब भी हमें कोई लॉ बनाना है जो एप्लीकेबिलिटी उसकी लानी है, तो वो हम सिर्फ पार्लियामेंट के बिल के थ्रू ही ला सकते हैं। और इसके अलावा जो पावर्स हैं वो दी गई हैं प्रेसिडेंट को।
अगर प्रेसिडेंट अपने रिकमेंडेशन से, अपने इंफॉर्मेशन से अगर कोई चेंजेस लाना चाहे या कुछ भी वेरिएशन करना चाहे टेरिटरीज में या बाउंड्रीज में या ऑल्ट्रेशन में, तो वो कर सकते हैं। तो मेनली जो पार्लियामेंट है दैट इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो प्रेसिडेंट अगर चेंजेस करते हैं या फिर पार्लियामेंट, बेसिकली वी गो बाय द पार्लियामेंट। दो जनरल प्रोसेस जो है चेंजेस का दैट इज ओनली डन वाया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स होती हैं उसमें, और आगे इन डिटेल आपको पता चलेगा कि कैसे पार्लियामेंट बैठती है, किन मंथ्स में बैठती है। जैसे अभी पार्लियामेंट बैठी हुई है, सेशंस पे डिस्कशन होता है, तो वो क्या डिस्कस करते हैं, क्या नई पॉलिसीज ला रहे हैं, कैसे नए चेंजेस कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे पता चलेगा। मैम प्लीज पूरा एक्सप्लेन करिए ताकि नए एक्ट या नए लॉ बनने का। देखो पूरा स्टेप ऐसा होता है कि आपके एक जैसे आपको रिकमेंडेशन आई है नए लॉ बनाने की, आपको लगा है कि देयर इज बीन रिक्वायरमेंट कि हम एग्जिस्टिंग लॉ चेंज करें। टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ किसी को एक आइडिया आया कि क्रिमिनल लॉ जो है वो हमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए उसमें, क्योंकि जो उसमें सेक्शंस हैं या जो भी उसमें पनिशमेंट्स हैं, जो डिटेल्स दी हुई हैं वो बहुत पुरानी है। वो सारी डिटेल्स हैं ब्रिटिशर्स के टाइम की, और जो उसमें पनिशमेंट है वो भी बहुत पुरानी है। अभी कोई इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत जनरल चल रहा है। तो ये जनरलिटी हटाने के लिए उन्हें लगा कि एक हमें बिल पास करना चाहिए। तो जो करंट गवर्नमेंट है, अभी करंट गवर्नमेंट जो है वो है बीजेपी की। उनके एक लीडर ने एक स्टेटमेंट डाला कि वी आर प्लानिंग टू चेंज द बिल। तो वो उन्होंने एक अपना पूरा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया होगा कि जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि पहले वाला एक्ट जो है आईपीसी, वो अब हम चेंज करके उसका नया नाम कर रहे हैं, एनबी करके कुछ नाम रखा है उसका। तो नित्या करके कुछ नाम रखा है। तो वो अब हम आईपीसी का जो नाम है वो अब हम ये करना चाहते हैं, और इसमें एग्जिस्टिंग इतने सेक्शंस हैं, अब हम नए वाले में ये डालना चाह रहे हैं, और जो पुराने वाले में उसमें पनिशमेंट इतनी है और अब हम नए वाले में ये डाल रहे हैं। तो ये पूरा एक उन्होंने बाइफिकेशन करके एक पूरा अच्छा मॉड्यूल बनाया होगा पेजेस का, जो उन्हें प्रेसिडेंट को भेजा। अब प्रेसिडेंट ने उसमें जो भी उनका फैसला था कि उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया या क्या किया, वो वेट करते हैं पार्लियामेंट सेशन में आने का, कि जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में बैठेगा उस टाइम पे वो ये डिस्कस करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कि एक जने के बोलने से चेंज नहीं हो जाता है, एक जने के बोलने से पूरी कंट्री का रूल या फंक्शनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। तो वो आएंगे, और फिर वो वाला बिल जो है वो हम डिस्कस करते हैं आगे। वही वाला बिल जो है, आ, जैसे अभी उनकी एक डेट मिलती है कि ये वाली डेट पे हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट में। अब वो वहां पे पार्लियामेंट में ये सजेशन रखा गया कि ये वाले चेंजेस हैं क्रिमिनल लॉ में, जो अब हमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट सोसाइटी, करंट नीड, हमें ये सारे चेंजेस करने चाहिए। तो पार्लियामेंट में जितने बाकी मेंबर्स थे, जितने लोकसभा में मेंबर्स बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये वाले चेंजेस ठीक है, वी आर हैप्पीली एग्री टू इट। एक वोट होता है कोई भी हम नया लॉ बनाते हैं तो वो वोट में देख, वोट गॉट मेजोरिटी, और वो बिल जो है वो पास हो गया है। अब जब वो बिल पास हो गया है तो उस बिल की एग्जीक्यूशन आती है, नए लॉज बनने की। जैसे ही ये पार्लियामेंट एंड होगा तो एक नया लॉ बनेगा, और तब हम लोग सारे जो हम पुराना लॉ थे वो छोड़ के अब हम नया लॉ पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि आपको डिटेल विथ सेक्शन में ही समझ में आएगा। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया कि ऐसे बिल पास होता है, पर जो डिटेल सेक्शन है, डिटेल क्या उसमें होगा, जब तक आप उसको पढ़ो, आप अमेंडमेंट्स को देखो, आप 368 को खोल के देखो कि क्या 368 कहता है, क्या अमेंडमेंट उसमें होनी चाहिए, और वैसे आपको फिर समझ में आएगा। सो आई होप सो अब क्लियर हो गया हो, और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी आपको समझाने की।
बट कुछ अगर बाद में जब हम पढ़ेंगे आप तब भी ये क्वेश्चन रेज़ कर सकते हो। सो आई एम एंडिंग टुडेज़ लेक्चर्स, बट अभी 5 मिनट और है हमारे पास आज की क्लास खत्म होने में, तो आप पूछ सकते हो कुछ और अगर है डाउट तो। Yes, thank you. Okay, welcome. So I am ending this session and nice have a lovely weekend. अब हम लोग मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट क्लास रखी जाएगी जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे।